So I'll be starting the presentation. Before I could start the presentation, I would Okay. request everyone to be in group. Hello. And any questions if you have during the presentation while you're on a particular screen, or I request everyone to note those questions and write it down on your notepad, and post the session I will address those queries to you. Okay. Hope I'm audible to everyone. Yes, sir, you're audible. Okay, so I'll be covering basically this in this training session. I'll be covering this is the basic modules. I'll be covering highlights of this training program to be. I'll be giving a little background towards SEZ Online, how it started, with then the important modules for gift SEZ units, and some other features which are available in SEZ Online. Then the data exchange milestone that you have covered with other nodal systems, and latest enhancements and developments that you have brought in SEZ Online. उन्होंने फाइल्स पर वो प्रोवाइड नहीं की इसके लिए सर. Sir, can you be on mute, please? Hello. Yeah. Thank you. So these are the key highlights in this training program. So the form. So sorry. Before that, I'll give you a little background. Avinash, will you be sharing this PPT after call? I'll be sharing this PPT post training session. I will share this PPT. Sure, You thanks. can just drop me an email. I'll be giving my contact details and every other details. You can just drop me an email and I'll share the PPT to you, or I'll share the PPT to Prakash ji, and then he can share it with you guys. Sure, thanks. Okay. And sir, please share the recording also along with the PPT. I think the recording would be with Prakash, so you can take it with him. Sure, sir. Thanks. Yeah. Okay. So coming back to the presentation. So a little background towards SEZ Online is that Ministry of Commerce and Industry back in 2000. Hello. Please, I would request not to put any disturbance here in the session. So the little background, and Ministry back in 2006-7, they decided that many SEZ Online, I mean many, they'll be receiving many invitations, and like many units will be coming and many SEZs will be developed in these SEZs. So they wanted a single window clearance kind of a system where all admin related transactions or custom modules can be under one screen, or where there is transparency, where there is a data storage of all these records and transactions can take place. So ministry initiated, I mean, there was this pilot projects going on in MEPS, DC and SIPS, and after its successful implementation, when ministry realized, okay, uh, this can be done nationwide, then sales online system came into picture. So now, as an
When SEZ Online was introduced back then in 2010, we had very limit. We had modules, but not complete. But now, when you see right now, we have covered almost all admin transactions, trade transactions, every right from your unit registration, file, your custom transactions. Data is now being shared with different nodal systems like RBI, DG systems, DGCINS. So over a period of time, if you see, this system has evolved a lot and made it much more user friendly for you, SEZ units and other custom users. So now coming back to the point, important modules which are important for gift SEZ units particularly, starting with SCRF, Service Export Reporting Form. So committee was formed where Service Export Reporting Form, which is a comprehensive reporting form where services like software exports, your on-site, off-site, your royalty, or other consultancy services that you would initiate and you want to report such services as service exports. So a committee was formed where DC of Noida, RBI, DGCNS, STP and NSDL were involved, and this comprehensive report was prepared where you can, where all SEZ units can put report their service exports and consultancy services if they have, they can present it, they can report it. This particular report has needs to be filed by 10th of every month. अगर आपने सबमिट करने के बाद भी अगर आपको कुछ चेंजेस है, आपको ऐसा लगा कि ये डेटा में मे बी मुझे क्रेडिट नोट है या कुछ भी, so what you can do is in the next service export reporting month, say for current month is May, so you have already submitted service exports for the month of May, but you have any changes. So in the month of June, when you're reporting your service exports, in the month of June, you can make those corrections, what you had to do in May. So all these is covered under service export reporting. We implemented this in August 2019. One more point I would like to highlight is that I will be showing this on my presentation, but and I will also be logging through my test user and showing how the screen looks actually. So don't worry, this is just a print screen that I'm showing you. I will also post the session. I will also take every individual screens. Okay, so basically, service export reporting form looks like this. You have your basic unit details and under general details, exporter details, and then you have a template, Excel template where you fill in your invoice details, summary details, invoice that you have service exports invoices, and a summary detail is displayed over here. And then you can go ahead and submit your request. This is how the print form looks of SCRL request. Here you can see that it is a summary details of what your export type is, under which code it is, and how many invoices have you raised under those. So summarized detail is displayed over here. Coming to the next module is software export. This is another important module where the test is unit need to look into like any units who are doing software exports, they'll have to file software specs request in SEZ Online. So I mean units now can file previous 7-year data software exports in SEZ Online right now.
पहले कैसे होता था कि यूनिट को सॉफ्टवेयर नंबर लेके आना पड़ता था आरबीआई से, फिर वो एक्सेल शीट में हमारे जो एक टेम्पलेट अपलोड रहता था, उसमें जाके उसमें जाके वो सॉफ्टवेयर नंबर डालना पड़ता था, एंड देन दे हैड टू अपलोड द सेम टेम्पलेट एंड सबमिट इट। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी हम लोगों ने इतना सिस्टम को रोबस्ट बनाया कि soft text number भी हमारे सिस्टम से जनरेट होता है, so unit need not go to RBI and take the soft text form and note it every time. अभी ये ट्रबल जो था यूनिट का वो बच गया है, and it's ease of doing right now. So once certified by the DC officer or authorized officer, the service export is already will be shared with RBI the next day. If you have submitted a software exports today, tomorrow it will be shared with RBI. So I will be showing this screen and how to upload post the session. DTA procurement is another module where you can see, say for example, you have a unit and you have procured, say you want to procure sofa or computer for your offices, so chairs for your offices. So you need to file DTA procurement. This module is available with unit maker. यूनिट मेकर का सेम जनरल डिटेल्स रहता है, जहाँ पे आपके यूनिट की डिटेल्स रहता है, फिर एक इनवॉइस डिटेल रहता है कि वो इनवॉइस नंबर क्या है, इनवॉइस वैल्यू क्या है, और फिर थर्ड डिटेल रहता है आइटम डिस्क्रिप्शन का। वहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हो कौन सा आइटम आप डीटी यूनिट से प्रोक्योर करते हो। तो DTA procurement module is for items which you are procuring from DTA unit. In this, we have also added a provision where multiple invoices रहेंगे या single invoice, sorry, not multiple requests या single request जो भी रहेंगे आप वो कर सकते हो। This functionality जो भी है अपलोड, आप रिक्वेस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो, मैं आपको इस स्क्रीन के बाद दिखा सकता हूँ। So this is how the DTA procurement form looks. So here you can see ये zero rated supply from GST registered unit bond under bond अगर bond if the DTA procurement is happening under a bond from letter or under आपका रिक्वेस्ट आईडी रहता है, आपके SEZ यूनिट नेम एंड एड्रेस रहता है, आप कहाँ से बाय कर रहे हो, सॉरी DT यूनिट के सप्लाई डिटेल्स यहाँ पे रहते हैं। Your invoice number and details will be displayed here. Item details, कितना आइटम्स है, डिस्क्रिप्शन क्या है उसका, क्वांटिटी, its value, and the IGST details of applicant will be displayed in this certificate. So so this is one form where you are procuring from any unit, and like for the furniture, computer accessories, as I said, आपको DTA procurement form बनना है। Next form is your domestic service procurement form. Say for example आप किसी on-site services लेते हो और customer service लेते हो, so these are services, not material based. DTA procurement are mostly like goods. यहाँ पे आप सर्विस रिपोर्ट कर रहे हो, आपने DTA यूनिट से कौन से टाइप के सर्विसेज अवेल किए हैं, तो यू नीड टू रिपोर्ट ऑल सच सर्विसेज in domestic service procurement. This feature is also available with unit maker, where the unit maker can create the request and
submit it to the unit approver, and then make a checker concept kind of. Once you can file up to 100 invoices under single DSPF request. You can also file multiple such kind of DT service procurement forms. Once you have once the DSPF form is approved by the custom officer, uh, an email alert will be shared to the DT unit on the service that एक अप्रूवल ईमेल जाता है डीटी यूनिट को कि ये आपका सर्विस अप्रूव्ड हो चुका है एंड आई विल शो यू द alert. So this is a sample email alert that goes to the DT supplier, where it states that the status of the DT service procurement for services procured by SEZ entity is approved. तो entity का नाम रहेगा, SEZ name रहेगा और request ID रहेगा and submitted by special officer. So this is approval email alert that is that is being shared by SEZ online to the DT unit. So in that case, DT unit need not worry कि if they ask you कि हमें कैसे पता चला कि आपका सर्विस अप्रूव, so they get this email alert from SEZ branch. So this is how the DSPF UI looks. Unit maker एक बार login करने के बाद you have to select your reporting bank, reporting your SEZ name and other details would be default, and then they have to upload the invoice detail. The template आता है, वो templates up. So basically, whatever it is, you are formatting the experiment in that format and just FTP that straight into basically server. My question, sorry. Avinash ji, you are on mute yourself right now. Avinash, your voice is not coming. And you could do also the reverse option of basically like read something. अविनाश जी आप म्यूट पर है. Can you hear me? Sorry, can you hear me? Yes, yes. Yes. आपने लास्ट लाइन क्या सुना था? Second, start. आप पिछले लगभग 1 मिनट से म्यूट पर है. अगर थोड़ा बैक ट्रैक करेंगे तो बेहतर होगा. आप DSPF के बाद से. DSPF के बाद से ना, ठीक है, fine. I'll start again with this module. Okay. No, sorry, I apologize for that. So basically, DT service procurement form is a module where you SEZ units ने जो service avail की है DT unit से, so they have to report it in this module. So currently you can file 100 invoices max. Multiple requests like that also in a month. There's no restriction to that. यहाँ पे भी मेकर चेकर का कंसेप्ट है. आप यूनिट मेकर ने क्रिएट किया वो रिक्वेस्ट यूनिट अप्रूवर के पास चला जाएगा एंड देन यूनिट अप्रूवर डिटेल्स को वेरीफाई करके डीएसी साइन करके वो सबमिट कर सकता है रिक्वेस्ट को. So that is not a problem. इसका जो मैक्रो रहता है जहाँ पे आप इनवॉइसेस कैसे अपलोड करोगे, आपको इनवॉइस डिटेल्स कैसे रिकॉर्ड करोगे, इसका मैक्रो अवेलेबल है हमारे डाउनलोड सेक्शन में. मैं पोस्ट सेशन में आपको बताऊंगा डाउनलोड सेक्शन कहाँ पे है एंड व्हाट ऑल मैक्रोस आर अवेलेबल ऑन दैट साइट. ओके. सो डीएसपीएफ रिक्वेस्ट का यूआई ऐसे दिखता है मेकर आईडी पे. यूनिट मेकर को पहला आपको रिपोर्टिंग मंथ रिपोर्टिंग ईयर सेलेक्ट करना पड़ता है. ये बाकी की डिटेल्स बाय डिफॉल्ट रहते हैं. एसईजेड सेंटर डिटेल्स, एसईजेड एंटिटी डिटेल्स बाय डिफॉल्ट रहते हैं. एंड देन आप ये जो मैक्रो में आप मेंशन करके रखते हैं वो आप वहाँ पे अपलोड करना पड़ता है. आई विल शो यू हाउ टू अपलोड एंड वो डिटेल्स कैसे भरा जाता है. वो पोस्ट दिस सेशन आई विल शो डिटेल्ड. So once you fill this, the DSP form is looking like this.
Here you can see, आप देख सकते हो कि बेसिक डिटेल्स ऑलरेडी कवर्ड है, आपके इनवॉइस डिटेल्स कवर्ड है, और कौन कौन से डिटेल सप्लायर्स, मतलब सप्लायर नेम, उनकी डिटेल्स, और आप कौन कौन से टाइप की सर्विसेज अवेल किए उनके उनसे, उनके डिस्क्रिप्शंस सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। सो जब भी अप्रूवर के पास आता है तो अप्रूवर डीएसी अटैच करके इसको अप्रूव करता है रिक्वेस्ट का, एंड देन गोज अहेड। एक सैम जैसे जैसे आपका डीएसपी रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाता है बाय द डीसी कस्टमर, अविनाश जी, कोई डिस्टर्बेंस, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, आपके उधर से बहुत डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा है, तो कैन वी शेड्यूल रीशेड्यूल दिस, जब whenever you are तब आपको कोई कॉन्फ्रेंस में मिल जाए या फिर सर आज अगर रिस्केड्यूल करना तो आज पॉसिबल नहीं रहेगा, कल का रख ले, नेक्स्ट Not tomorrow, yeah. Agree with that. नेक्स्ट वीक का रख लीजिए। नेक्स्ट वीक ना चलेगा, नेक्स्ट वीक ठीक है, अभी व्हाट यू कैन डू इज आप म्यूट कर लो, गो ऑन शेयरिंग द स्लाइड्स, आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू ऑल द यूनिट्स। यू सर आप ओनली अभी भी अगर किसी में शिफ्ट हो सकते हो तो शिफ्ट हो सकते हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कोई कैबिन है कॉन्फ्रेंस रूम में। ठीक है सर, आई एम सो सॉरी। मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ एक्सप्लेन। अविनाश जी आपका म्यूट कर लीजिए, जस्ट कीप ऑन स्क्रॉलिंग द स्लाइड्स। ओके ओके, ठीक है, फाइन। Okay, fine. The basic concept of SEZ online system is that Government of India Ministry. स्लाइड नहीं है, प्रेजेंटेशन कर, हाँ ओके, नाउ इट इज विजिबल नाउ, ठीक है। So there are various module in the SEZ online system. The Government of India and Ministry of Commerce has implemented, and the unit are required to file it. Some mandatory modules are required to be filed, जिसके अंदर सबसे पहले होता है SER for reporting your exports, DTA procurement for हाँ DSPF. So we were discussing, ठीक है, सर्विस एक्सपोर्ट वेरी सिंपल है, एक एक्सेल शीट यूटिलिटी है, SEZ ऑनलाइन, इट कैन बी फाइल थ्रू अप्रूवर लॉगिन। अप्रूवर लॉगिन अगर आपने बना लिया है तो अप्रूवर में जाके सीधा ये सर्विस एक्सपोर्ट रिपोर्टिंग फॉर्म में क्लिक करके यू कैन अपलोड द एक्सेल यूटिलिटी विच यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द SEZ ऑनलाइन डाउनलोड सेक्शन। दिस रिपोर्ट गोज टू द RBI, DGC and STP is reported to all the others ministries to monitor the export, right? SERF हो गया, उसके बाद में DTA procurement हो गया। नेक्स्ट कौन सा स्लाइड है? हाँ, DTA procurement is mainly for goods. अभी there is a compulsion from the custom officer that within 45 days आपका जो भी गुड्स आता है SEZ के अंदर, you have to submit the same in SEZ online system. कैसे करना है आपको? मेकर में जाना है, DTA procurement पे क्लिक करना है, fill the details of the invoice in the sections, submit the same. It will go to approver. Approver will submit with a digital signature. It will go to the custom officer. Custom officer will endorse. Endorsement जो होता है उसका एक ईमेल जाएगा, किसको जाएगा? आपके सप्लायर को। फिजिकल एंडोर्समेंट उन्होंने बंद कर दिया, सो दैट ईमेल विच इज बीइंग रिसीव्ड बाय द सप्लायर कि आपका एंडोर्समेंट हैज बीन डन बाय द कस्टम्स अथॉरिटी is termed as an endorsement, and on that basis he can claim the GST benefit or refund if he wants to go for refund, वो refund में वो document print out करके लगा सकता है। So it is mandatory for everybody to file the DTA procurement. Next session में we will discuss in detail how to file the DTA procurement. Next, हाँ अभी ये हो गया goods के लिए। Now coming to services. Services also has been made compulsory 2018 से mandatory है कि each and every services जो भी आप लोगे you have to submit the same in the SEZ online system. This is totally different. इसमें एक Excel utility आपको दिया जाता है। Excel utility में details fill करना, invoice का, supplier का address and all that stuff you have to fill it and upload in the SEZ online system from the maker
मेकर फिर सबमिट करेगा तो इट विल गो टू अप्रूवर, अप्रूवल विद द डिजिटल सिग्नेचर, इट विल गो टू द कस्टम्स अथॉरिटी, सेम प्रोसेस, कस्टम्स विल अप्रूव, एंडोर्समेंट विल गो टू द सर्विस प्रोवाइडर। आपको जैसे आपको कंसल्टेंट ने किसी ने सर्विस दिया, delayed DSPF system will allow, but if missed for system will allow, but I have doubt whether the customer people will allow or not. So इसके अंदर भी the custom people say that within 45 days you can check with the customer official. It is required by them that you within 45 days you submit the same in the SEZ online system. तो जैसे ही आपका इनवॉइस आता है कोई भी ड्यूटी फ्री, सपोज 1 अप्रैल का आ गया, तो इमीडिएटली आप फाइल कर दो, डोंट वेट फॉर द टाइम के भाई मैं कर दूंगा। कभी कभी क्या डिले में भूल जाने के तो रह जाता, तो फिर कस्टमर पीपल विल रिजेक्ट योर और विल रेज क्वेरी टाइम पीरियड का। सो इट इज एडवाइजेबल दैट यू सबमिट द सेम ऑन टाइम। दिस इज फॉर सर्विस। APR, हाँ सर्विस हो गया। नाउ नेक्स्ट इज APR, दिस इज फॉर ऑपरेशनल यूनिट्स। And APR, this is also for operational units, but so I mean normal units they can also submit the same for investment and employment they can submit. So APR जो भी unit now commencement operation किया है last financial year, there is a timeline. Within that timeline you have to submit physically as well as on SEZ online system also. रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, रेंट डेफिनेटली वो विद इन SEZ का है, उसका क्लैरिटी अभी लेना है। यू कैन गेट द क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द DC ऑफिस। इलेक्ट्रिसिटी पे ड्यूटी नहीं है, सो नॉट रिक्वायर्ड। यस, मेंटेनेंस रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, कमिंग टू दैट, आपने रिन्यूअल बहुत सारे यूनिट का रिन्यूअल है अभी। एज पर द SEZ रेगुलेशन, द यूनिट जिसका भी 5 साल हो गया ना, दे हैव टू सबमिट बिफोर 2 मंथ, 2 महीना पहले। जिसका भी 5 साल कंप्लीट और नियर टू कंप्लीट 2 महीना पहले दे हैव टू सबमिट टू द डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफिस एंड इट हैज टू बी डन इन SEZ ऑनलाइन सिस्टम। वो आप जब आप मेकर में लॉगिन करेंगे, एट द टाइम यू विल सी LOA रिन्यूअल, LOA एक्सटेंशन के नीचे ही एक LOA रिन्यूअल का लिंक है, वहां पे क्लिक करना है। यू विल बी forwarded to form F1, वो फिलअप करके प्रिंट लेके विद द कवरिंग लेटर यू हैव टू सबमिट द सेम टू द DC ऑफिस। टेम्पररी LOA फैसिलिटी, दैट इज डिफरेंट। LUT एनहांसमेंट एंड LUT एनहांसमेंट वो बाद में देख लेंगे डिटेल नेक्स्ट सेशन में। DCP, अभी देयर आर मेनी इश्यूज ऑफ द यूनिट दैट जो AF कैटेगरी के अंदर जो है, दे आर नॉट फाइलिंग SERF एंड ऑल दैट, तो यू कैन मेक अ रिक्वेस्ट टू अवनीश जी for enabling the same. प्रकाश जी, सॉरी, मैं क्या बोल रहा था कि मैं ये सारी स्क्रीन्स एक लॉगिन में जाके चेक कर सकता हूँ। वांट आई कैन शो देम, आई कैन लॉगिन इट इन डिस्प्ले कि स्क्रीन कैसे दिखता है। आप प्रिंट कर दीजिए, ठीक है, फाइन, यू कैन शो इट ऑल, उनको दिखा दीजिए, कोई प्रॉब्लम। एंड नेक्स्ट डेट दे दीजिए, आपके चैट बॉक्स में डाल दीजिए नेक्स्ट विच डेट यू विल बी अवेलेबल, सो दैट एवरीबॉडी कैन जॉइन। हाँ, उसके अंदर है ना जो नए यूनिट्स है, उसके अंदर हाउ टू क्रिएट एडमिन कैसे क्रिएट करना है, फिर मेकर क्रिएशन ऑफ मेकर, डिजिटल सिग्नेचर सेटिंग्स का भी एक आप ले लीजिए। सम एक्सपर्ट I can show that. I can show everything right now also. Like if you. ओके, तो खाली म्यूट करके हाउ टू क्रिएट एडमिन एंड मेकर यूजर वो दिखा दीजिए, म्यूट कर लीजिए आप। Sure. एंड APR I'll do one thing. नहीं, प्रकाश जी सुनिए, प्रकाश जी सुनिए, मैं मॉड्यूल्स का अभी दिखा लेता हूँ। ये जो बाकी के स्क्रीन्स का है ना, जो नहीं, उसका नेक्स्ट वीक ट्यूसडे मैं आपको डेट कंफर्म करता हूँ। उसमें सारा मैं डिटेल्स बता देता हूँ कि यूनिट क्रिएट कैसे, सॉरी यूनिट मेकर कैसे क्रिएट करते हैं, अप्रूवल कैसे क्रिएट करते हैं, DAC मार्क कैसे करते हैं, ये सारी डिटेल जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं मैं उसमें मैन्युअली दिखा देता हूँ इसमें। अभी बेसिकली मॉड्यूल्स कैसे दिखते हैं, मॉड्यूल्स कैसे आप ये कर सकते हो, DSPF, SCRF, DT प्रोक्योरमेंट, ये सारे मैं दिखा देता हूँ। और जो क्वेश्चन है उसका भी आंसर बना के नेक्स्ट जो प्रेजेंटेशन रहेगा उसमें ट्राई कीजिए कि वो कवर हो जाए आपके PPT में। आई थिंक देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच आर नॉट कवर्ड इन योर PPT।
वो जो क्वेश्चन एज इन कैसे चैट बॉक्स में है ही वो, और द यूनिट विल मेल इट टू यू. ठीक है. Let them mail it to me. Let them mail it to me. Within a day or two, I'll reply to it. आपका ईमेल मेरे एड्रेस contact details में मैं share करता हूँ. I'll share my contact details also. मैं उसमें, so don't worry. I'll share that with them so they can email me the queries and I can one by one reply with them a solution or जो भी query answer address them. Okay. So I'll be just logging in from my minute maker and I'll show you. Okay. You're able to see my screen, right? या सेम दिख रहा है, ठीक है. Yeah, so this is my maker login. यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे मॉड्यूल्स दिखे हैं. So starting with SC service export reporting form. Service export reporting form unit approval में है. We'll first cover other modules like detail procurement में जो बताया था. तो detail procurement में form ऐसा दिखता है unit maker के साइड पे. कौन से DT यूनिट से आप procure कर रहे हैं, you just have to DT यूनिट का GSTN है या नहीं है तो you have to specify your, वो verify करने के बाद you have to enter the details, उसके name and addresses, whether it is supply under bond or under payment of IGST. You have to select and accordingly if it's under bond तो bond के details आपको specify करने पड़ेंगे यहाँ पे, उसके taxable value कितना है. And then if it's under supply of payment of IGST, then you have to mention the bank name, challan number, challan date, IGST amount which is paid, compensation cess if applicable. कैन यू राइट अ जीएसटी नंबर, उसमें आप जीएसटी नंबर किसी पे डाल सकते हो क्या? Wait a minute. I'll stop the sharing for just a minute. श्योर, ठीक है. You can see my screen, right? So, for example, you can see my screen, right?
So once you verify तो GSTN के पोर्टल पे जाके वो वेरीफाई करता है कि ये GSTN करेक्ट है एंड वो यूनिट के डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे पॉपुलेट हो जाती है. Specify clearly. So say for bank, Jalan number, once you save, you'll get additional details like invoice. You'll have to add your invoice number, invoice value. Say for example, you can imagine second nature of transaction sale, currency अगर INR है तो Indian rupee यहाँ पे है. And save. Item details में you get an option to enter your item description कितना quantity है, unit of measurement यहाँ पे सारा and then आपका जो है एचएस कोड है आप सर्च करके डाल सकते हो. कोई तो सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है. बाकी सब तो डेटा एंट्री है. इट इज जस्ट अ सिंपल डेटा एंट्री, बट व्हेन यू गो फॉर दैट HSN कोड वहीं पे सब अटक जाता है. Sir, you in this case you will have to be sure कि यूनिट्स को करेक्ट एचएसएन कोड डालना पड़ता है, नहीं तो कस्टमर्स को इशू आता है कि अगर वो प्रॉपर्ली नोटिफाइड नहीं रहेंगे. सो आप क्या कर सकते हो ना, आप सीबीआईसी के वेबसाइट पे जाके आपके जो आपका प्रोडक्ट कौन मतलब जो भी है जो प्रोडक्ट है वो कौन से चैप्टर के अगेंस्ट आता है कहीं सीबीआईसी की वेबसाइट पे अवेलेबल है. ठीक है. पीपल डू लाइक कुछ लोग तो ऐसा करते हैं, गूगल में सर्च मारा और सीधे डाल देते हैं. नहीं नहीं नहीं, दैट्स इनकरेक्ट. सी मैं फिलहाल बता भी सकता हूँ सीबीआईसी के इसमें. ठीक है. CBSE दिखा तो सो फ्रॉम वेयर दे कैन गेट द गुड्स. यूनिट्स शुड रिमेंबर दैट ये 12 डिजिट कोड इम्पोर्टेंट रहता है. सो दिस 12 डिजिट कोड इज ऑलवेज टू बी. आप ये यू कैन नोट इट डाउन, यू कैन आपके रेफरेंस या पे एक यूनिट ने क्वेश्चन भी पूछा था कि सम SEZ में क्या होता है कि पहले फाइल कर देते हैं. सो दिस इज द रिक्वेस्ट आईडी वेयरइन द DTS सप्लायर आस्क फॉर. हाँ. So this is a 12 digit request and this is very आप ये यूज कर सकते हो रेफरेंस. आप ये आपके रिपोर्टिंग में या यू कैन जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए आप यूज कर सकते हो. एंड इफ इश्यूज भी है तो इफ यू वांट टू ब्रिंग इट टू SEZ ऑनलाइन टीम, so you can use this request ID as a reference to asking add file so and so request. I don't know the current status of it, या मुझे एक आइटम पर्टिकुलरली चेंज करना है या कुछ है या or any query. So we can, this is a common reference basically to use. So basically CPLC का website है. You're under customs, you can, sorry.
आपका कस्टम ड्यूटी कैलकुलेटर रहता है कहीं से। तो बेसिकली ये वेबसाइट में आपको आपके कस्टम टैरिफ्स जो रहते हैं पर्टिकुलरली या मैन्यूल्स यू कैन रेफर, ड्यूटी कैलकुलेटर भी यहाँ पे अवेलेबल है। सो आपको अगर ड्यूटी कैलकुलेशन करना है तो यू कैन जस्ट, इट्स इजी, इट्स वेरी यूजर फ्रेंडली दिस वेबसाइट। सो नेक्स्ट टाइम आपको आपका कुछ देखने का प्रोडक्ट रिलेटेड, सो आई रिक्वेस्ट यू टू गो टू CBSE वेबसाइट एंड चेक इट। So basically this is how a detailed procurement form looks like. मैं in detail next session में Amnish, cover I करूँगा। already have one file. Can I share my screen? Yeah, please. Sure. I'll stop sharing. म्यूट कर लीजिए आप, म्यूट कर लो। So दिख रहा है? Is it visible मेरा screen? Yes. So this is maker inbox जिसके अंदर सर्विसेज मैंने फाइल किया है। मेकर ने मतलब मैंने सबमिट कर दिया, बट देयर वाज सम क्वेरी, कुछ क्वेरी आ गया तो अप्रूवर ने सेंड बैक कर दिया। इट इज़ इन माय इनबॉक्स। आई और ये जो क्रिएटेड है, जो मैंने सबमिट नहीं किया, लेट अस ओपन। तो सर्विसेज में एक्सेल अपलोड करेंगे ना, यहाँ पे अपलोड करना आपको, जस्ट अपलोड। दिस इज ऑलरेडी प्री फिल्ड, मतलब ये कंप्लीट हो चुका है, इसमें अपलोड करने की जरूरत नहीं है। आई हैव टेकन अ कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम पंकज एंड एसोसिएट्स, राइट। तो दिस इज जैसे एक्सेल अपलोड करेंगे तो इस तरह से जनरेट होगा। इट इज़ वेरी मैंडेटरी इवन सर्विसेज के लिए भी, जैसे CA सर्विसेज है मेरा, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विसेज दिया है, तो आई हैव टू सबमिट द सेम इन SEZ ऑनलाइन पोर्टल एंड गेट इट अप्रूव। अप्रूवल कैसे आएगा, आई जस्ट शो यू। मैं ये सबमिट करके दिखा देता हूँ। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये रिक्वेस्ट ID इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू प्रोवाइड इट टू द सर्विस प्रोवाइडर एंड टू द कस्टम्स अथॉरिटी टू फॉर योर अप्रूवल। इनवॉइस के ऊपर ये लिखना है आपको, जो भी इनवॉइस जाएगा, ऑन दैट बेसिस दे विल वेरीफाई द रिक्वेस्ट ID एंड अप्रूव द सेम। ओके, लेट अस ट्राई टू सबमिट दिस। हाँ, सबमिट करेंगे, पॉपअप एनेबल है। सो दिस इज द कंफर्मेशन पेज। हाँ, ये मैंने, दिस इज DOC अप्रूव्ड सर्विसेज, और ये जो उसका SSC कोड डाला उसके हिसाब से जो सर्विसेज आ रहा है वो ठीक है। कंफर्मेशन पेज पे क्लिक करना है, सिंपल से सबमिट हो गया, राइट। ओके, इट विल गो टू अप्रूवर। अप्रूवल के इनबॉक्स में जाके अगेन आपको अप्रूव करना है विद द डिजिटल सिग्नेचर। इट विल गो टू द कस्टम्स अथॉरिटी फॉर अप्रूवल। अभी कोई अप्रूव्ड सर्विसेज देख लेते हैं, इफ आई एम एबल टू गेट सम अप्रूव्ड आउट ऑफ द चार्ज। TTA सर्विसेज ले लेते हैं। रिक्वेस्ट इज विद दिस, डेट चेंज करना पड़ेगा मुझे, इनिशिएटेड है। सबमिटेड है। ओके, दिस इज अप्रूव्ड 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 सेंड बैक अप्रूव्ड। चलो अप्रूव्ड अप्रूव्ड वाला देख लेते, कोई भी एनीवन। ठीक है, ये अप्रूव्ड हो गया। यू कैन टेक द प्रिंट आउट एंड प्रोवाइड द सेम टू द सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, दिस फॉर्म इज डिजिटली साइंड एंड अप्रूव्ड बाय चेतन अशोक कुमार वर्मा, SEY स्पेसिफाइड ऑफिसर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एंडोर्समेंट आपको 45 डेज के अंदर ले लेना है। अगर 45 डेज के अंदर आप नहीं फाइल करते हो गुड्स एंड सर्विसेज, तो कस्टम स्पेसिफाइड ऑफिसर जो है वो नहीं करते, दे रेज द क्वेरी। सो टाइमली इसे सब फाइल कर लीजिए। एनी प्रॉब्लम्स आता है अभी, ठीक है, थोड़ा डिस्टर्बेंस है, बट यू कैन कॉल एनीबडी। अवनीश जी को कॉल करके आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए। यानी जो भी आपका SEZ ऑनलाइन में प्रॉब्लम आ रहा है, गेट इट सॉर्टेड आउट एंड सबमिट द सेम विद इन 45 डेज। अभी गुड्स का एक दिखा देता हूँ। प्रकाश जी क्या करता हूँ, वी कीप दिस सेशन नेक्स्ट वीक इमीडिएटली। मैं अभी फिलहाल मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर करता हूँ, यूजर की जो क्वेरीज है लेट देम एड्रेस इट टू मी। ठीक है, अभी फिलहाल आई एड्रेस इट टू देम एंड देन नेक्स्ट वीक आई कंप्रेसिव रिव्यू जो भी है कंप्रेसिव सेशन कर लेते हैं, ठीक है। ओके फाइन, ठीक है। DTA प्रोक्योरमेंट खाली दिखा देता, आप खाली चैट बॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट बढ़ा देना। आई विल शेयर अ स्लाइड मेरा डिटेल्स।
DTA procurement में जाते हैं. So this is by DTA. Okay, auto charge आता है उसमें. This is being approved by the customs authority. Print में जाएंगे. Okay. What I have procured, ये मेरा procurement था. मैंने एक valve लिया था, PVC pipe, clamp, wall box, PVC ball valve. ये पूरे goods मैंने procure किए थे. I filed the same in the DTA procurement section. Got it approved from the customs authority. And this is the approval online. So this is how you have to file each and every material. जैसे कोई बाल लिया है मैंने, तो उसका हर एक details I have to enter in the SEZ online system. Each and every material I have to enter, including their ITCHS code, value, product value, numbers, quantity descriptions, and नीचे zero rated supply select करना है. You can select zero rated and submit the same in the SEZ online system. So what we can do is we can reschedule this क्योंकि उनको वहाँ पे डिस्टर्बेंस बहुत है. Any queries आप उनको मेल कर दीजिए. उनके कॉन्टैक्ट्स आई थिंक आपके पास आ गए होंगे. I'll just share my details. I'll just share my details. श्योर. ओके. आप मैंने बंद कर दिया. आप शेयर कर लीजिए आपका. Okay, so can you state it now? Okay, I'm sharing it in the chat. ये मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है. ये मेरे कलीग जगजीत सिंह के डिटेल्स है. सीनियर अभिषेक जी का है. एंड देन हमारे अंदर का नंबर है. सो बेसिकली आप तक जितने मेरे ये पूरे सेशन में आपको जहाँ तक मैंने लिया था आपको जितना भी क्वेरीज लगे सो प्लीज़ जस्ट ड्रॉप एन ईमेल टू मी और एड्रेस इट टू यू. एंड नेक्स्ट जो सेशन मैं प्रकाश जी से कोऑर्डिनेट करके कर दूँगा उसमें इन डिटेल में आपको फाइलिंग कैसे करते हैं, हाउ टू अपलोड, अगर आपके आइटम्स ज़्यादा है तो मैक्रो यूज़ करके आप अपलोड कैसे कर सकते हैं. 10 आइटम्स है या 20 आइटम्स है तो मैन्युअली एंटर करना डिफिकल्ट होता है कभी कभी. तो 10 आइटम आप एक साथ कैसे अपलोड कर सकते हो वो सारी इन डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेगा. आप APR फॉर्म कैसे फाइल कर सकते हैं, MPR फॉर्म्स में आप कैसे फाइल कर सकते हैं एंड एवरीथिंग. एंड देन राइट फ्रॉम यूज़र क्रिएशन, यूज़र को फंक्शनलिटी कैसे देते हो, एडमिन का फंक्शन क्या है, अप्रूवर का फंक्शन क्या है, मेकर का फंक्शन क्या है, मेरे साथ आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन माय नेक्स्ट कन्वर्सेशन. I hope everyone has noted the contact details. Can you please share your email IDs? I could not see the screen. It's there right now. Sorry. Can you see? मैंने चैट बॉक्स में भी डाला है और स्क्रीन पे भी दिख रहा है. Okay. हेलो प्रकाश जी. बोलिए.
हाँ सर, आपके पास कोई ऐसा चेकलिस्ट है कि जो ये फॉर्म होता है तो इतने टाइमलाइन में पे फाइल कर देना है, और उसकी पेनल्टी या वो क्या हो सकती है, ऐसा कोई चेकलिस्ट आपके पास अवेलेबल है? चेकलिस्ट नहीं है, बट SEZ रूल का मैं आपको दिखा सकता हूँ, वेयर इट इज रिटन। जस्ट अ मिनट, मैं आई विल बी शेयरिंग माय द स्क्रीन, जस्ट अ मिनट। Stop sharing my screen. हाँ, आपका स्टॉप कर लीजिए, हमने मैंने stop. हाँ, ये जो रूल बुक है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की वेबसाइट है, अपना जी म्यूट कर लीजिए आप। So this is SEZ rules which you can download from www.apcs.in से, and updated up to कब तक है, February 2020 तक है। इसके बाद एक दो अमेंडमेंट है, so you can refer this book. उसके अंदर let us go to rule number 30 which is saying about DTA procurement. ओके ओके, एक मिनट, इसलिए मैं जूम करूँ। यस अंदर रख दिया, किधर नहीं है इसमें, यूएसए में फाइल रखा ना नेक्स्ट। 29 आ गया, now we can go to 30. ठीक है, क्लियर। टाइमलाइन कहाँ रखा है, लेट अस गो टू द टाइम। हाँ, ये फोन नंबर जो है ये पढ़ लीजिए आप। सही है, परफेक्ट। सर पर मेरा कंसर्न ये था कि ऐसा कोई आपके पास चेकलिस्ट है तो जिससे और भी हेल्पफुल हो सके सब कम्युनिटी को। सी, पूरा रूल बुक का चेकलिस्ट बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ईच एंड एवरी रूल्स इज इम्पोर्टेंट। सो हमने बनाया है चेकलिस्ट, बट इट डजंट कवर दिस प्रोक्यूरमेंट पार्ट। जो भी बेसिक आपके पास हो तो वो बेसिक, थोड़ा बहुत तो बेसिक तो कंप्लायंस हर एक के कंप्लीट हो सके। ये डे टू डे एक्टिविटीज है, देखिए आपको भी पता है ये डे टू डे एक्टिविटीज है, तो डे टू डे एक्टिविटीज में जो भी बेसिक कवर हो जाता है वो। एक मिनट, लेट मी शेयर, मेरे डेस्कटॉप पे ही होगा। यस ठीक है, यस फर्स्ट स्टेप आपका जो होता है एक्सेप्टेंस ऑफ एलओए। आप आपका अप्रूवल भी पढ़ोगे तो भी उसमें अंदर 2-3 कंडीशन तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। हाँ वो तो है। SEZ, हाँ, ये प्रेजेंटेशन इसलिए मतलब रखा था कि बिकॉज SEZ ऑनलाइन में इट इज मैंडेटरी टू गो, सो दैट वाज द रीजन वी हैव डन दिस, बट ड्यू टू सम रीजंस डिस्टर्बेंस वो हो नहीं पाया प्रॉपर्ली। वी कैन रीशेड्यूल इन द नेक्स्ट वीक। प्रकाश जी, अविनाश जी को रिक्वेस्ट के लिए ईमेल करने पर ये भी शेयर किया जा सकता है डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट? यस यस, यू विल गेट द पीपीटी डेफिनेटली। ओके परफेक्ट, थैंक यू। नहीं, पीपीटी के साथ ये चेकलिस्ट भी? ये चेकलिस्ट तो हमारा है, उनका नहीं है। ओके, चेकलिस्ट के लिए आपको हमको मेल करना पड़ेगा, विल बी शेयर। तो आपका डिटेल शेयर कर सकें सर?
ओके हाँ ठीक है, पहले चेकलिस्ट डिस्कस कर लेते हैं, बाद में आपको मैं शेयर। जरूर जरूर जरूर। सर कई सारे यूनिट, हाँ आपको पढ़ना है, सारे you have to read and Yeah. tell me because let me see, मतलब अंडरस्टैंडिंग क्या है वो पता चलेगा, पढ़िए। Regarding the Gujarat SEZ Act, the certificate Gujarat says, I am reading this point number 4. All SEZ units shall obtain approval of the Development Commissioner to avail the exemption from all the taxes, cess and duties, fees and any other levies under the state laws as under the section 21(1) and 2 of the Act. For the SEZ unit has to apply to the DC's office eligibility certificate for the state stamp duty exemption. It is a one-time process. राइट क्यों आप डीसी को अप्लाई करेंगे? इट इज स्टेट गवर्नमेंट, रीजन मैं बता देता हूँ। बिकॉज अंडर द गुजरात एसईजेड द पावर ऑफ इशुएंस ऑफ एलिजिबिलिटी हैज बीन डेडिकेटेड टू द डेवलपमेंट कमिश्नर। स्टेट गवर्नमेंट ने पावर दे दिया डीसी को कि भाई टू एज अ सिंगल विंडो आप हमारी तरफ से यू कैन इशू द एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर एग्जेम्पशन ऑफ स्टेट लेवीज विच इज देयर अंडर सेक्शन 21(1). So पहले GST से पहले VAT था and other taxes were there. For that you were required to obtain the eligibility certificate. अभी खाली eligibility certificate under the Gujarat Act is only pertaining to lease deed, stamp duty exemption जो एक है state government का, ठीक है। बट सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मेन कंडीशन है दैट इज बॉन्ड कम लीगल एंटिटी, इससे ऊपर वाला 3 नंबर पड़ गया। Says rules 2006, rule number 22, bond cum legal undertaking. The unit shall execute a bond cum legal undertaking in Form H immediately after the issuance of LOA. It will act as a permission to operate, including availing exemption, drawback, and concessions. The bond cum undertaking shall be jointly accepted by the Development Commissioner and by the specified officer and acceptance letter. Note: the details of bond cum LUT must be uploaded on SEZ online NDML website. Detailed procure mentioned at the SEZ online NDML download legal undertaking. ठीक है, अब रनीश जी को आप अगर किसी इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड आप उनको मेल भी कर दीजिएगा कि वी वांट टू आल्सो अंडरस्टैंड द एलयूटी। और इसके बाद का एक और प्रोसेस होता है कि जैसे एलयूटी का वैल्यू आपने एग्जीक्यूट किया, उसमें आप कोई यूनिट कम वैल्यू डालता है, एक यूनिट ने तो 1 लाख रुपये डाला और उसका एग्जाम्पशन उसने 1 लाख से ज़्यादा लिया, इन दैट केस वो नॉन कंप्लायंस हो गया था एंड ही हैज़ टू सबमिट एन एडिशनल बॉन्ड। तो सेम हैज़ टू बी अपलोडेड इन दिस इज एन ऑनलाइन सिस्टम। तो नेक्स्ट आप अविनाश जी को वो भी मेल कर दीजिए कि जो एडिशनल बॉन्ड एसईजेड ऑनलाइन में अपडेट क्या सबमिट करना है वो कैसे करना है। दैट इज़ अ स्पेशल उनका एक अलग सा सेक्शन है विच इज़ कॉल्ड एलयूटी डिटेल सबमिशन, उसमें आप ये कर सकते हो, तो वो एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, मेन बॉन्ड हो गया, एसईजेड ऑनलाइन का स्ट्रीमलाइनिंग हो गया, थर्ड हो गया जीएसटी रेगुलेशन है, दिस कम्स अंडर जीएसटी रेगुलेशन। हाँ ठीक, ये पढ़ लीजिए आरसीएमसी, दिस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, अगेन शेयर करो। अभी दिख रहा है? कैन यू सी इट नाउ? यस यस, अभी ओपन हुआ। हाँ 6 नंबर SEZ rules 2006, rule number 22(1)(5), registration cum membership certificate. After issuance of LOA, unit has to approach Export Promotion Council for EOU and says EPCES for issuance of RCMC. It is mandatory criteria for availing any SEZ exemption and drawback. No duty exempted SEZ transaction must be initiated before issuance of RCMC. The registration process is mentioned in epcs.in, how to become a member of EPCS, and after registration of EPCS portal, the RCMC member must be updated on SEZ portal too. इसमें आई थिंक देयर इज सम अमेंडमेंट। अभी ये पुराना शीट है, व्हाट गवर्नमेंट हैज डन इज नाउ आई थिंक आरसीएमसी विल बी थ्रू डीजीएफटी की वेबसाइट से होगा रिन्यूअल। आई एम श्योर 100% श्योर इट इज थ्रू द डीजीएफटी पोर्टल
उसका मैं आपको लिंक दे दूंगा लास्ट नेक्स्ट मेरा जो SEZ कंप्लेंट्स ट्रेनिंग है, आई विल शेयर यू द सेम। ये थोड़ा करेक्शन है यहाँ पे। नाउ इट इज थ्रू DGFT। पेमेंट आपको EPCS को ही करना है, बैंक अकाउंट डिटेल्स एंड ऑल दैट उनको ही करना है, बट जो प्रोसेस है वो DGFT के थ्रू कर दिया है। क्यों किया पता नहीं है इन लोगों ने। Prakash sir, so this is Rakesh here sir. So the one thing is वो RCMC का है, if we file the SEIS application तो भी हमको DGFT से लेना पड़ता है या फिर EPCS से लेना पड़ता है? पेमेंट EPCS को करना है, EPCS से लेना है, बट ये प्रोसीजर जो फाइलिंग करना ऑनलाइन वाला वो DGFT के थ्रू किया है। पहले EPCS ही था। ओके, बिकॉज द SEIS के नोटिफिकेशन के अंदर तो वो लिखा हुआ है उसके अंदर नहीं, SEIS का नोटिफिकेशन आपको रिफर करना ही EPCS। बट आई वांट टू अंडरस्टैंड आप SEIS का क्यों रिफर कर रहे हो? व्हाई यू आर रिफरिंग नोटिफिकेशन ऑफ SEIS? No, because if SEZ unit को हम लोग जा रहे हैं तो if we have the RCMC as per the DGFT which you said just now, so whether it will suffice even for that or नहीं दूसरा नहीं, EPCS जो SEZ के लिए है वही आपको लेना है। ओके, श्योर सर, थैंक यू। किसी और का नहीं चलेगा इसमें। This under 8 is under GST regulations, recruitment of SEZ I card, वो तो मैनुअल है, वो आपको एक लेना है। Issuance of ID cards, purchase of asset in the new name, ठीक है। समझिए मला हाँ जरा बोल लो कि 1948 सर जी। Yes. तो तशी फिजिकल तिकडे पाठवलं। As per SEZ Rule 2006, 19.4, commencement of operations, the above mentioned compliances from point to 11 are for export of before starting the export of services. The letter of approval shall be valid for 1 year, within which period the unit shall commence production service activity and immediate the action of commencement of operation to the and intimate the date of commencement of operation to the development commissioner. By commencement of operation, we means export of service. Thus, the date of commencement of operation means that the date on which first export of service take place from the sales premises. Also, ensure to get a commencement certificate from the development commissioner that they have taken commencement of operation date on records mandatorily and must be applied on the SEZ online website also. अभी जिसका नहीं हुआ एंड LOA is nearby to expire, please apply 2 महीना पहले to the development commissioner for LOA extension. COA अगर आगे है तो वैलिडिटी 5 years हो जाता फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन। एंड COA इसके अंदर वो नहीं लिखा है कि विद इन 1 month आपको फाइल कर देना है, वो इज नॉट मेंशन्ड ओवर हियर। जैसे ही आप कमेंसमेंट करते हो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज करते हो 1 month you have to submit to the covering letter online also। ठीक है, अभी उसके बाद वाला बढ़िया प्लीज 13 में क्या। Yeah, SEZ Rule 2006, Rule number 18.2, Para 2, list deed. Copy of registered list deed shall be furnished to the Development Commissioner concerned within 6 months from the issuance of letter of approval, and failure to do so, the approval committee may take action to withdraw the letter of approval. Must be executed for a minimum period of 5 years. Details of list deed must be uploaded in SEZ online.ndml website. दूसरे SEZ में इट्स वेरी स्ट्रिक्ट, बट अपने इधर में दे आर नॉट सो स्ट्रिक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट, सो लेट अस स्किप दिस। बट इट इज मैंडेटरी। आपने किया कि नहीं किया ये बताओ। यस, मेरा हो गया, ये सब कंप्लायंसेस हो गए सर। विद इन 6 months यू हैव सबमिटेड? या सर। ओके ठीक है, चलो एक्सटेंशन ओके मैंडेटरी मस्ट कमेंस प्रोडक्शन विद इन एक्सटेंशन। SERF फाइल कर रहे हो आप? SERF मंथली हम सर रेगुलरली फाइल कर रहे हैं। DCF वो जो फॉर्म था वो नहीं फाइल हो रहा है। क्या प्रॉब्लम आ रहा है उसमें? सर वो फॉर्म भी अपलोड नहीं हो रहा था, बस वो रिक्वेस्ट नंबर कैसे जनरेट करना है वो पता नहीं चल रहा था। एक मिनट, मेरा स्क्रीन अभी आ रहा है इसमें? हाँ आ रहा है। DTA सर्विसेज पे क्लिक करना है आपको।
अरे यार, फोन नंबर टाकला नाही तू मोबाईल लागलाय फोन नंबर नाही ना प्रकाश जी आपके स्क्रीन पे फिलहाल सिर्फ एक्सेल ही दिख रहा है, आप अगर वो वेबसाइट का दिखाए तो टीटीए के लिए फोन नंबर वरचा आपल्या सरांचा आहे ना वाटतं एक 12 सरांचा तिथला डेक सरांच्या हा हा एक्सेल अकाउंट टाक ना फोन नंबर एकदा विचारून घ्या कुठं चालू आहे आता आपला मेन कॉन्टॅक्ट नंबर म्हणजे फोनचा चेतन पवार साहेब थोड़ा म्यूट करू शकता का? ठीक है, लॉगिन किया मेकर में, एक मिनट। यस सर। सर्विसेज के लिए डीटीए सर्विसेज प्रोक्योरमेंट फॉर्म दिख रहा है। यस। क्लिक किया, यहाँ पे मंथ सिलेक्ट करना है आपको, ये कौन सा महीना चल रहा है, मई ना, ये सिलेक्ट किया, जो भी महीने का आपका इनवॉइस है वो मंथ, रिपोर्टिंग मंथ यू हैव टू सिलेक्ट। ओके, जो महीने का you have to specifically see the date of invoice. For that you have to select the month. ठीक है, मई महीने का है तो मई you have to select. Even though just confirm on the SEZ online next week. So ये pre-filled है, ठीक है, सेव करना है आपको। हो गया, रिक्वेस्ट आईडी जनरेट हो गया, ठीक है, ओके। सिंपल, कुछ करना था कर दिया, हो गया। यहाँ पे आपको इनवॉइसेस अपलोड करना है वो? नहीं, यहाँ पे एक एक्सेल शीट अपलोड करना है। एक्सेल यूटिलिटी उनका स्पेशल डिजाइन है, मैक्रोज एनेबल, वो आपको अपलोड कर देना है, तो आपका वो डीएसपीएफ जनरेट हो जाएगा। लेट अस सी, वो अभी वो एक्सेल में शायद अगर मेरे है डेस्कटॉप पे, वो एक्सेल डाउनलोड कहाँ से करना है? जैसे एसईआरएफ का होता है एक एक्सेल, वो डाउनलोड किया हुआ है, इसका एक्सेल कहाँ से होता है? हाँ, मैं दिखा देता हूँ आपको। You can see my screen. Yes sir. Go to the download section, click on the download. ओके, सबसे लास्ट में रखा है, हाँ, क्योंकि ये सबसे लास्ट यही रिपोर्ट आया था, इसके बाद में अपडेट नहीं आया। हाँ, सो मैंने क्लिक किया, डाउनलोड हो गया। लेट अस सी, वापस शेयरिंग का इशू होगा। हाँ ठीक है, दिख रहा है अभी। यस सर। एनेबल एडिटिंग, ओके। इनवॉइस सिलेक्ट करना है, इनवॉइस नंबर लिखना है, इनवॉइस का डेट, अमाउंट ऑफ द इनवॉइस, सर्विस अकाउंटिंग कोड। चला गया है, चला गया है। चला गया। सिंपल है, जो इनवॉइस के अंदर डिटेल्स वो आपको फिलअप करना है, डेट, इनवॉइस डेट, अमाउंट, सर्विस अकाउंटिंग कोड, सर्विस डिस्क्रिप्शन। ये थोड़ा ऐसे शुड नॉट हाइड लाइक दिस, पूरा ही करना, नहीं तो एरर आता है बहुत टाइम। एड्रेस हो गया उसका, सप्लायर का, उसका जीएसटी नंबर एंड ऑल द डिटेल्स, ईमेल एड्रेस वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर एंडोर्समेंट जाएगा।
सप्लाई अंडर LUT है या ऑन पेमेंट ऑफ GST है, एंड लास्ट which is also one of the most important, जैसे आपने कोई भी सर्विसेज लिया, इट शुड बी अप्रूव्ड इन द हर ट्रेनिंग सेशन में मैं बोलता ही हूँ, देयर आर 66 सर्विसेज विच आर अलाउड। तो आपने जो भी सर्विसेज लिया है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे आपने मैंने जो लास्ट टाइम दिखाया था CA सर्विसेज, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विसेज सिलेक्ट करना है। फिर आफ्टर फिलिंग ऑल द जनरेट फाइल करना है आपको, नॉट रन माइक्रो, वो आप एनेबल कंटेंट्स एंड ऑल दैट सेटिंग्स करना है। आपको क्या IT टीम विल हेल्प यू आउट इन दिस पर्टिकुलर थिंग्स, अदरवाइज NSDL कैन सपोर्ट यू इन दिस। सो ये अभी नहीं होगा मेरे उसमें कि मैंने एनेबल अभी कंटेंट नहीं किया है। आप करके देख लो, अगर नहीं आ रहा तो वी आर देयर टू सपोर्ट यू। श्योर सर, थैंक यू सर। ये डेस्कटॉप पे सेव कर लो, और जैसे मैंने वो दिखाया था उस पर अपलोड, ब्राउज करके अपलोड कर दो, जनरेट हो गया। सिंपल, वेरी सिंपल। थैंक यू सर। अभी एक और प्रकाश जी बहुत compliance- हेल्प कर दिया आपने सर, थैंक यू। थैंक यू एक और कंप्लाइंसेस रह गया है, जस्ट यस This was nicely explained, sir. Yes, sir. Thank you. हाँ, APR submission। यस सर। Now, as the timeline has gone, the unit जो development commissioner office will are scrutinizing the APR submitted by the units। जैसे ही उनका scrutiny और सब हो जाएगा, जिन्होंने सबमिट नहीं किया, they will be issued a letter to submit the same। वो लेटर इशू करने से पहले ही I will request all the जो भी operational units है जिनको applicable है APR to submit the same, नहीं तो the DC office will issue the letter। सर इसमें भी 5 इयर्स का एक साथ में दिखा रहा है, आप एक बार इसको भी गाइड कर सको तो। 5 इयर्स का कहाँ दिखा रहा है? हाँ सर, APR फाइलिंग कर रहा है तो वहाँ पे 5 इयर्स का ही आपको पीरियड चूज करने का बोल रहा है, तो वहाँ पे 5 इयर्स का एक साथ दिखा रहा है। मेरा तो डेवलपर लॉगिन है, आई कैन नॉट शो यू ऑन दैट मेरे सिस्टम में, बट यू कैन कम डाउन टू माय ऑफिस विथ योर लैपटॉप, आपने देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। श्योर सर। ओके फाइन, थैंक यू। ओके सर। प्रकाश जी आपका कांटेक्ट डिटेल्स जरा शेयर कर देंगे? कॉन्टेक्ट डिटेल्स नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन जो है उसमें एवरीथिंग विल बी देयर। उसके अंदर SEZ कंप्लाइंसेस ले रहे हैं और GST है, मिस्टर संजय जैन सर भी रहेंगे, 10th को है। मैं PPT शेयर दिखा देता हूँ जस्ट क्या रहेगा उसमें, सो दैट एक कुछ अगर रह गया ये कंप्लाइंस में तो वी कैन कवर इन दैट PPT ऑल्सो। आपका नेक्स्ट उसमें वो आ भी जाएगा, ट्रेनिंग PPT। जस्ट अ मिनट। शेयरिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में। यहाँ पे कुछ शेयर नहीं होगा सर? नहीं, आई हैव टू शेयर नहीं शो होगा। माय स्क्रीन। नहीं, फाइल शेयर नहीं कर रहा, आई एम ट्राइंग टू शेयर द डेस्कटॉप। दिख रहा है? इज इट विजिबल नाउ? यस सर। ठीक, दिस इज, ये मेरा नेक्स्ट जो 10th को है उसमें रहेगा। व्हाट विल बी कवरिंग इन दैट, आई जस्ट शो यू। वैलिडिटी, LOA ब्रॉडबैंडिंग, एक्सेप्ट और टर्म्स एंड कंडीशन जो हमने एक्सेल शीट में देखा। बॉन्ड, मॉनिटरिंग ऑफ बॉन्ड, एडिशनल बॉन्ड, GST रजिस्ट्रेशन फॉर एन SEZ यूनिट, व्हाई इज इट रिक्वायर्ड, सप्लाई टू SEZ जो भी है वो भी देख लेंगे। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, फिर भी अगेन वी विल बी डिस्कसिंग इन द सेम, जिन्होंने उनके लिए अप्रूवल ऑफ लिस्ट ऑफ सर्विसेज फॉर 0 डेट जो 66 है, उसके अलावा अगर आपको चाहिए वो RCMC, आई विल ट्राई टू गेट द डिटेल्स फ्रॉम द EPCS फॉर न्यू। अगर वो मेरे को दे देते PPT तो वो ऐड कर दूंगा इसके अंदर। IC, कस्टम्स अथॉरिटी जो DTA प्रोक्योरमेंट, DSP तो हमने देख लिया अभी। मॉनिटरिंग बॉन्ड ये ओके ठीक है, ID कार्ड्स एंड एक्सेट्रा, दिस विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट सेशन। इसके बाद एक GST का सेशन रहेगा, वो अलग से रहेगा, मैं नहीं रहूँगा, वो कोई और लेंगे। एंड मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स इसमें डाल दूँगा।
ये डीसी ऑफिस के कॉन्टैक्ट। अच्छा, आपको किसी का क्वेश्चन था, somebody asked the time limit, जो रूल मैंने दिखाया था। What you can do is, ये जो ईमेल एड्रेस है query@ecs.in, इस पे आप मेल कर दीजिए, कॉपी टू मी, दे विल डेफिनेटली रिप्लाई इन रिटर्न। गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का डालना है आपको। ओके सर, ओके। query@ecs.in लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी क्वेश्चन हो उस पर डाल दीजिए। इट इज़ फ्री सर्विसेज, आपको कोई चार्ज नहीं देना है। एंड रूल्स आपको जैसे कोट किया वो आपको दिखा देते हैं। एंड आज ही एक यूनिट को किसी को तो दिखाया था मैंने, जस्ट अ मिनट। ये उनकी वेबसाइट है, मेंबर्स क्वेरीज जो भी है आपके यहाँ पे डाल दिए जाएंगे। they will definitely reply as per the regulation। SEZ रेगुलेशन में कहाँ है, कैसे है, they will definitely reply। सर और पहले के जो प्री क्वेश्चंस जो पूछे गए उनके आंसर्स आर आल्सो अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। members queries log answered by GT with Grant Thornton, which is a very big consultant who is advising you, providing services to EPCS। EPCS pays to them, आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, इट इज़ फ्री ऑफ सर्विसेज। आपको मेल करना है खाली, बस यू हैव टू जस्ट मेल ऑन जो मैंने ईमेल एड्रेस दिया उसमें। ठीक है, अभी जो आपने क्वेश्चन किया है वो मेल कर दीजिए, लेट अस सी क्या आंसर है। कॉपी मेरे को भी रखिएगा। श्योर सर। ओके फाइन, थैंक यू ऑल। ओके सर, थैंक यू सर।